When people hear that a case has reached The Hague, they often assume there is only one world court. In reality, International Court of Justice and International Criminal Court are separate institutions. ICJ जो है वो लीगल डिस्प्यूट्स जो स्टेट्स के बीच में होते हैं उनको सॉल्व करता है और एडवाइजरी ओपिनियंस भी देता है. On the other hand, the ICC prosecutes individuals accused of the gravest international crimes. This distinction explains why the same crisis can produce proceedings before both courts. One may examine the responsibility of a state while the other examines the criminal responsibility of a particular leader or commander. In this presentation, we will compare both courts side by side so that their legal foundations, jurisdiction, procedures, powers, and weaknesses remain clear. What are they? The easiest way to separate the two courts is to ask who stands before them. At the ICJ, जो parties हैं वो होती हैं states यानी countries. ये जो कोर्ट है जो ICJ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो डिसाइड ये करती है कि कोई ट्रीटी तो ब्रीच नहीं हुई, कोई फोर्स अनलॉफुली तो यूज नहीं हुआ, or whether one state owes reparations to another. On the other hand, the ICC is different. It is a criminal court for नेचुरल पर्सन्स. जैसे हर कंट्री का अपना क्रिमिनल कोर्ट होता है, ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है फॉर नेचुरल पर्सन्स, फॉर द ह्यूमन बींग्स. इसका काम ये है कि डिटरमाइन करना कि वेदर एन इंडिविजुअल बियर्स क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, war crimes, or aggression. So the ICJ does not send presidents or generals or other persons to the prison, and the ICC does not decide whether one state owes another state compensation. Historical origins. The ICJ belongs to the institutional settlement created after the Second World War. It was established by the UN Charter in 1945 and began functioning in 1946, replacing the Permanent Court of International Justice. The ICC followed a different historical path. The post-war Nuremberg and Tokyo trials established that individuals can be held responsible under international law. Later, the tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda revived international criminal adjudication. States adopted the Rome Statute in 1998, and the ICC began operating in 2002 as a permanent court rather than ad hoc tribunal created for one conflict. पहले होता यह था कि conflict के बाद कोई tribunal बनाया जाता था, वो decide करता था कि either crime has been committed or not. तो वर्ल्ड लीडर्स ने ये सोचा कि ऐसा क्यों ना हो कि क्राइम होने से पहले ही हमारे पास एक इदारा हो जो ये देखे कि ये जो वार चल रही है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें इधर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या जेनोसाइड तो कमिट नहीं हो रहा. ये चीज़ें देखने के लिए स्टेट्स फार्म्ड एन इंस्टीट्यूट व्हिच स्टार्टेड वर्किंग इन 2002. Legal foundation. The legal foundations explain the court's institutional positions. The ICJ is established by the UN Charter and its statute forms an integral part of the Charter. Every UN member is therefore a party of the ICJ statute. Although this does not mean every state has accepted jurisdiction over every dispute. कोई state किसी dispute पे ICJ का जुरिस्डिक्शन मानती है, कोई कोर्ट कोई स्टेट नहीं मानती. ये मगर है कि सारे जो भी यूएन के मेंबर हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ द आईसीजे. मगर आईसीजे के मेंबर्स जो हैं वो सारे यूएन के मेंबर्स स्टेट्स नहीं हैं.
ICC was created by a separate multilateral treaty, the Rome Institute. States choose whether to join that treaty or not. The ICC is therefore not a UN court, even though it cooperates closely with the UN and may receive referrals from the Security Council. The ICJ is formally part of the UN and is described as its principal judicial organ. Its judges are elected independently by the General Assembly and Security Council. The ICC, by contrast, is an independent international organization established by the Rome Institute. It has a formal cooperation relationship with the UN, but it is not subordinate to the General Assembly or Security Council. The Security Council can refer situations to the ICC, including situations involving states that have not joined the Rome Institute. But the court's legal authority and procedures remain governed by its own treaty. ये जो ICC का फंक्शन है वो मैंने एक अपने वीडियो में बयान किया हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। वो मेरा वीडियो है ICC और US के जो आपस में टसल है, जो अपोजिशन है ऑफ US टू द ICC, उसमें मैंने सही तरह से ये खोलकर बयान किया हुआ है कि द ICC जो है उसको सिक्योरिटी काउंसिल केस रेफर करता है और ICC की जो जुरिस्डिक्शन है वो आगे भी हम बयान करेंगे। Who can appear before them? This is the examination-friendly distinction to remember. Article 34 of the ICJ Statute provides that only states may be parties in contentious cases. An individual, company, or organization cannot file a contentious case there. Authorized UN organs and specialized agencies may, however, request advisory opinions. वो advisory opinions ले सकते हैं, मगर वो भी parties नहीं हैं। कौन? UN organs और उसके जो specialized agencies हैं। At the ICC, the accused is always a natural person. The court does not convict a country or a government or armed group or entity, rather individuals. It asks whether a particular individual committed or ordered or assisted or otherwise bears the criminal responsibility for a crime within the Rome Institute. What subject matter do they cover? ICJ has broad subject matter jurisdiction when states have consented. Its docket includes treaty interpretation, territorial and maritime boundaries, diplomatic protection, use of force, environmental questions, and alleged violations of the Genocide Convention. The ICC's material jurisdiction is narrower but more severe in character. The Rome Institute gives its jurisdiction over 4 core crimes: genocide, second, crimes against humanity, third, war crimes, and fourth, crimes of aggression. ये जो है jurisdiction है ICC की through Rome Institute. The ICC is not a general international criminal court for terrorism, corruption, or ordinary murder unless the conduct also satisfies the legal elements of one of these 4 crimes. ये जो terrorism है, corruption है और जो दूसरे crimes हैं, ये directly ICC की jurisdiction नहीं है, मगर इन crimes के थ्रू अगर वो जो हमने 4 crime बताए, genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of aggression, इनका कोई शक है तो फिर ICC उस पर अमल करना शुरू करेगी, उस पर केस चलाना शुरू करेगी। How is jurisdiction established? Neither court possesses unlimited universal jurisdiction. किसी की भी दोनों में से unlimited jurisdiction नहीं है। For a contentious ICJ case, the respondent state must generally have consented. जो respondent state है, उसका consent लाजमी है कि हाँ ICJ में केस चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ठीक है? Through a special agreement or a jurisdictional clause in a treaty, an optional class declaration or in other recognized cases. वो कैसे हो सकता है? वो जनरली एग्रीमेंट करे कि हाँ केस चलना चाहिए, या जो ट्रीटी ब्रीच हुई है उसमें ये क्लास हो के इफ ट्रीटी इज ब्रीच्ड देन वी विल रीच द ICJ, तभी वो केस ICJ में जा सकता है। मतलब किसी भी तरह से दूसरी स्टेट का कंसेंट होना चाहिए तभी केस जाके ICJ में जाएगा। मगर ICC की जुरिस्डिक्शन वो है, उसमें जो पार्टी है उसकी टेरिटरी यूज की गई हो,
इस टेरिटरी ऑफ स्टेट पार्टी, जैसे फलस्तीन आईसीसी का मेंबर है, इजराइल आईसीसी का मेंबर नहीं है, मगर नेतन्याहू के जो क्राइम्स हैं वो फलस्तीन में हैं, तो स्टेट पार्टी की जो टेरिटरी है वहां पे नेतन्याहू ने क्राइम कमिट किए हैं तो तभी आईसीसी की वहां जुरिस्डिक्शन है। दूसरा, नेशनलिटी ऑफ अ स्टेट पार्टी, नॉन पार्टी स्टेट एक्सेप्ट जुरिस्डिक्शन, जब नॉन पार्टी एक्सेप्ट करे तब। और चौथा, जब यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई सिचुएशन रेफर करे आईसीसी को तब जाके उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, नहीं तो नहीं बनती। हाउ डू प्रोसीडिंग्स बिगिन? An ICJ contentious case normally begins when one state files an application against another or when both jointly submit a dispute. The applicant must identify the legal basis for jurisdiction. Advisory proceedings begin differently. An authorized UN organ or agency submits a legal question, तभी जाके advisory proceedings चलेगी, नहीं तो नहीं चलेंगी। ICC on the other hand, ICC investigations may be triggered by a state party referral, a Security Council referral, or the prosecutor acting on their own initiative with approval from the pre-trial chamber. एक चैम्बर है प्री ट्रायल चैम्बर आईसीसी की, वो अप्रूवल देगी प्रोसिक्यूटर को, तब जाके वो उस पर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करेगा। A non-party state may also accept jurisdiction for a defined situation. These are gateways to investigation, not automatic findings of guilt. ये प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी, गिल्ट जाके बाद में पता चलेगा, जैसे नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स हर कंट्री में करती हैं, वो बाद में जाके डिसाइड होता है कि हाँ क्राइम वाज कमिटेड और नॉट। व्हाट प्रोसीडिंग्स डू दे कंडक्ट? आईसीजे प्रोसीडिंग्स रिजेंबल इंटरनेशनल सिविल लिटिगेशन, जैसे सिविल सूट्स हम फाइल करते हैं हर एक कंट्री में, इसी तरह से ऐसे समझा जाए कि ये जो आईसीजे है, ये एक सिविल लिटिगेशन की इंटरनेशनल कोर्ट है। यहाँ स्टेट सबमिट करती हैं थ्रू रिटन प्लीडिंग्स एंड प्रेजेंट ओरल आर्ग्यूमेंट्स। इन अर्जेंट केसेस द कोर्ट में इंडिकेट प्रोविजनल मेजर्स टू प्रिजर्व राइट्स व्हाइल द केस कंटिन्यूज। केस कंटिन्यू हो सकता है, मगर अर्जेंट मेजर्स में कोई प्रोविजनल जो है मेजर दे सकता है आईसीजे, जिससे किसी हालत को रोका जा सकता है, किसी कंडीशन को रोका जा सकता है, किसी काम को रोका जा सकता है। It may also give advisory opinions which are generally not binding but carry substantial legal authority. जो एडवाइजरी ओपिनियंस होते हैं वो बाइंडिंग तो नहीं होते हैं, मगर उनका एक वेट होता है, उनकी एक सब्सटेंशियल लीगल अथॉरिटी होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जो यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं वो देखते हैं कि किसी कंट्री के लिए आईसीजे ने एक एडवाइजरी जारी की है मगर वो उस पर अमल नहीं कर रहा, मतलब the country is not a good member of the UN or ICJ. So in other circumstances or other situations, जो दूसरी कंट्रीज हैं वो उस कंट्री से डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली किसी नई सिचुएशन में अवॉइड करती हैं, उसके लिए कोई रेफरल नहीं देती, उसको कोई यूएन जनरल असेंबली में सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह से इसकी एक अथॉरिटी है लीगल। On the other hand, the ICC follows a criminal process investigation, pre-trial proceedings, confirmation of charges, trial and appeal। जैसे मैंने पहले बताया कि जो कंट्री के नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं जैसे वो फंक्शन करते हैं, ऐसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी फंक्शन करता है। इन्वेस्टिगेशन, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, कंफर्मेशन ऑफ चार्जेस, ट्रायल एंड अपील, ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। द अक्यूज हैज़ डिफेंस राइट्स and victims may participate and seek reparations under the Rome Institute. Judges and why only one court has a prosecutor? The ICJ is composed of 15 judges elected for 9-year terms by the General Assembly and Security Council voting independently. Because it hears claims presented by states, it has no prosecutor. ठीक है, इसका प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कौन से केसेस सुनता है आईसीजे? जो स्टेट्स उस पर क्लेम करती हैं। द आईसीसी हैज 18 जजेस इलेक्टेड बाय द असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज आल्सो फॉर 9 ईयर्स टर्म्स। इसकी स्टेट पार्टीज की असेंबली अलग है, मगर आईसीजे के जो जजेस हैं वो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू आते हैं।
आईसीसी के जो जजेस हैं वो असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज, जो भी मेंबर हैं आईसीसी के, उनके थ्रू आती है। It requires an independent office of the prosecutor because investigations and criminal charges must be developed and presented against accused individuals। क्योंकि यहाँ क्रिमिनल चार्जेस पे फोकस है, तभी प्रोसिक्यूटर की जरूरत होती है, तभी आईसीसी की में प्रोसिक्यूटर है मगर आईसीजे में प्रोसिक्यूटर नहीं है। ICC is one comparison, this is one comparison where the structure are intentionally different rather than incomplete variants of each other. Responsibility, proof, and the presumption of innocence. The ICJ evaluates evidence to decide whether a state has breached an international obligation, a treaty, an agreement, etc. The evidentiary approach can vary according to the nature and seriousness of the allegations. There is no criminal defendant and no sentence of imprisonment. At the ICC, the prosecutor bears the burden of proof. प्रोसिक्यूटर जो है उस पर बर्डन होता है प्रूफ का। द अक्यूज इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट एंड गिल्ट अ ट्रायल मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। दिस क्रिमिनल स्टैंडर्ड रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कन्विक्शन एंड लिबर्टी इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज। अक्यूज तब तक जो है इनोसेंट ही होता है जब तक उस पर चार्जेस जो है साबित नहीं होते। व्हाट आउटकम्स कैन दे प्रोड्यूस? An ICJ judgment may declare that a state violated international law and may require cessation, non-repetition, compensation, or another form of reparation. Provisional measures are interim directions intended to preserve rights before the final judgments. In advisory proceedings, the court states its legal opinion rather than deciding a contentious claim between states. The ICC can convict or acquit an individual, impose imprisonment, order fines are forfeited, and award reparations to victims. An arrest warrant is not a conviction. It is a procedural step intended to bring a suspect before the court. जो अरेस्ट वारंट होता है उसका मतलब ये नहीं होता है कि उस पर चार्जेस साबित हो गए। अरेस्ट वारंट में ये होता है कि उस बंदे को जिस पे इल्जाम है उसको कोर्ट के सामने लाया जाता है। जैसे अरेस्ट वारंट है नेतन्याहू के और प्यूटन के। इनका ये मतलब नहीं है कि उन पे चार्जेस साबित होते हैं, इसका मतलब ये है कि these two persons should be presented before the ICC. Enforcement is the shared weakness. क्यों? Both courts depend on states. Weakness इसलिए कि both courts depend upon states, but in different ways. ICJ judgments are binding on the parties to a case. Under Article 94 of the UN Charter, a state may seek Security Council assistance when other party fails to perform its obligations. But political deviance and the veto can limit this route. The ICC has no police force. It relies on states to arrest suspects, transfer them to the Hague, protect witnesses, and provide evidence. Consequently, a legally valid arrest warrant may remain unexecuted if states refuse or are unable to cooperate. जैसे बोथ केसेस में है, प्यूटन के केस में भी है और नेतन्याहू के केस में भी है, क्योंकि आईसीसी की अपनी पुलिस नहीं है, कोई फोर्स नहीं है जो इनको अरेस्ट करे, ये स्टेट्स पे डिपेंड करता है और ये एक पॉलिटिकल मसला है। कोई स्टेट किसी दूसरे स्टेट के लीडर को क्यों आईसीसी के सामने पेश करेगा? Membership does not mean the same thing. All members of the UN are parties to the ICJ statute, but this fact is often misunderstood. कैसे? It does not mean that any state may sue any other state over any issue. A jurisdictional basis is still required. इसमें भी jurisdictional जो basis होता है वो जरूरी है। ICC membership is narrower because states may ratify or accede to the Rome Statute. जब तक स्टेट रोम इंस्टीट्यूट को रेटिफाई नहीं करता तब तक वो उसका मेंबर नहीं है। As of 2026, the Assembly of States Parties lists 125 members. Important non-parties include the US मेंबर नहीं आईसीसी का, चाइना मेंबर नहीं आईसीसी का, रशिया नहीं, इंडिया नहीं, एंड पाकिस्तान भी आईसीसी का मेंबर नहीं है। Non-membership does not remove every possibility of jurisdiction because
territorial jurisdiction, a declaration of acceptance, or a security council referral may still be relevant. Representative cases and situations. The names of proceedings provide a useful clue. ICJ contentious cases are generally styled as one state against another, such as Nicaragua versus United States. ये ICJ का केस है. Or the Jadhav case between India and Pakistan. ये भी ICJ का केस है. ICC work is organized through situations and cases against individuals. A situation refers to the broader geographical and factual context under investigation. Individual cases emerge when charges are pursued against particular suspects. The examples on these slides are illustrative rather than exhaustive. And procedural stages differ from one matter to another. जैसे ये जो ICC में थॉमस लुबांगा, उमर अल बशीर, व्लादिमीर पुतिन, सिचुएशंस अफगानिस्तान, फलस्तीन एंड यूक्रेन, ये जो है इलस्ट्रेटिव है रादर देन एग्जॉस्टिव. ठीक है, ये समझने के लिए. Pakistan's position. Pakistan's relationship with the two courts is different. As a UN member, it is a party to the ICJ statute and has appeared before the court, most notably in the Jadhav case brought by India. ICJ jurisdiction still has to be established in each contentious dispute. Pakistan has not ratified the Rome Statute and is therefore not an ICC state party. Pakistan ICC state का party, ICC का party नहीं है, उसका member नहीं है. Nevertheless, ICC questions may remain relevant if alleged conduct occurs on the territory of a state party. A non-party accepts jurisdiction, or the Security Council makes a referral. तब पाकिस्तान मतलब जवाबदेह हो सकता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, even though Pakistan is not a member. For Pakistan, the policy debate involves sovereignty, military and political exposure, selectivity, and the broader demand of accountability. The criticism are different, but enforcement links them. इनकी जो क्रिटिसिज्म है वो डिफरेंट है, मगर उनकी जो इन्फोर्समेंट है इन दोनों को आपस में लिंक करती है. कैसे? क्रिटिसिज्म ऑफ द ICJ often focuses on consent, delay, and enforcement. The court cannot simply assume jurisdiction because a dispute is serious and it cannot prosecute individuals. Criticism of the ICC includes allegations of selective justice, unequal exposure of weaker states, dependence on state cooperation, and the role of a politically divided Security Council. These limitations should not be confused with an absence of legal authority. Rather, they demonstrate the recurring problem of international law. Courts may pronounce and prosecute, but implementation still depends heavily on political will. कैसे? जैसे यूरोपियन यूनियन, USA, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज जो भी खिलाती हैं, इन्होंने ICC को बहुत बड़ा सराहा जब ICC ने अरेस्ट वारंट जारी किए व्लादिमीर पुतिन के लिए. मगर जब सेम ICC ने अरेस्ट वारंट जारी किए नेतन्याहू के लिए, तब ये अपोज करने लगे. ये एक पॉलिटिकल इश्यू है. Can both courts examine the same crisis? The courts are not mutually exclusive. The same armed conflict may raise two distinct sets of legal questions. कैसे? Before the ICJ, the issue may be whether a state breached a treaty obligation, including duties under the Genocide Convention. Before the ICC, the issue is whether evidence proves that identified individuals committed crimes within the Rome Statute. मतलब ICJ के सामने अगर कोई आएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इजराइल आएगा, ICC ये देखेगा कि जेनोसाइड कन्वेंशन को तो इजराइल ने एज अ कंट्री ब्रीच नहीं किया, और जो ICC के सामने आएगा वो इजराइल के जो लीडर्स हैं जैसे नेतन्याहू है या जो दूसरे उसके मिनिस्टर्स हैं, वो उसके सामने आएंगे कि इधर दे हैव कमिटेड क्राइम्स, दे हैव ऑर्डर्ड द क्राइम्स. ये चीजें ICC देखेगा. So a finding or provisional measure at one court does not automatically determine the result at the other.
because the parties' legal tastes, evidence and consequences are different. Final comparison. The final formula is simple. ICJ means states, legal disputes, international responsibility, declarations, cessation and repression. ICC means individuals, international crimes, criminal guilt, warrants, imprisonment and repressions. Their functions are complementary. International law needs mechanisms to address both wrongful state conduct and personal criminal responsibility. Their shared weakness is enforcement. उनकी जो weakness है वो enforcement है, क्योंकि they both don't have resources or forces to enforce their orders. The effectiveness of both courts ultimately depends on whether states cooperate consistently, including when legal action affects powerful actors or close allies. इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की ये सीरीज, द फाइनल फार्मूला बता दिया हमने. सो टू लर्न प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ आईसीसी एंड अंडरस्टैंड द यूएस अपोजिशन टू इट, visit our channel and watch US versus ICC from the Hague Invasion Act to the Netanyahu sovereignty or saving Netanyahu. Subscribe to KCSA. Understand the event, use it in the examination. The